हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं मैथ्स आसान कैसे कर सकते हैं। ना मैथ्स आसान करने के लिए दो तीन चीजें। पहली चीज, कैलकुलेटर फॉर 2 डिजिट कैलकुलेशंस यूज नहीं करते। ट्रस्ट योरसेल्फ दैट यू कैन कैलकुलेट। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड वेल अगर हमारी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन अच्छी है। लेट्स से 13 into 14 कितना होता है? मे बी किसी को 5 सेकंड लगता है इसको करने में, किसी को 10 सेकंड लगता है करने में, किसी को 15 सेकंड लगता है। मुझे ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मुझसे नहीं हो सकता है। फाइन ना। अगर मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ 13 into 14 मुझे कैसे करना चाहिए, तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है 13 into 10 plus 13 into 4। 14 को मैंने तोड़ दिया 10 plus 4 में। 13 into 10 is 130, 13 into 4 is 52। 130 plus 52 becomes 182। फाइन। अगर मुझे 16 into 17 करना है, the same method can be adopted, या फिर हम कह सकते हैं 16 into 16 plus 1। 16 into 16 होता है 256, plus 16 करेंगे तो आता है 272। We can use that for a lot of numbers। Find 19 into 21 करना है, तो बचपन में हम लोगों ने सीखा था a square minus b square, a minus b into a plus b। 20 minus 1 into 20 plus 1, 20 minus 1 that becomes 20 square minus 1 square। आंसर आ जाता है 399। So there are multiple techniques in which we can solve these questions। It does not require any kind of quick calculation techniques। हम लोगों ने जो बचपन में सीखा है वो अगर हमारे साथ है तो we'll be able to solve a lot of questions। So that is something that all of you need to understand। अगर आपकी टेबल्स अच्छी हैं 1 into 1 से 30 into 30 तक के टेबल्स आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। मुझे पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। Like let's say if someone asks you a 21 into 27 कितना होता है, can I say 27 into 20 कितना होता है? 27 into 20 becomes 540, plus 27 कर देंगे, 540 plus 27 हो जाता है 567। Fine। So moment we are good with these calculations, we will be able to solve a lot of questions easily। There are some beautiful tricks that you can use to solve questions as well। एक दो tricks देखते हैं and let's see how it works। For example, let's say all of us are familiar with 25 into 25 कितना होता है? The answer that all of us know or most of us know is 625। Fine, we can do it the normal way। एक दूसरा तरीका जो हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू करते हैं इस प्राइमरली 5 into 5 कितना होता है? 25। 2 के बाद क्या आता है? 3। 2 into 3 क्या होता है? 6। The answer comes as 625। Is this same rule applicable to other numbers as well? The answer is yes। If I want to do a 35 into 35, what do I get? 5 into 5 is 25। 3 के बाद क्या आता है? 4। 3 into 4 क्या होता है? 12। सेम अगर मुझे 45 into 45 करना है, सेम थिंग कैन बी डन। 5 into 5 क्या होता है? 25। 4 के बाद क्या आता है? 5। 4 into 5 क्या होता है? 20। Fine। So what we need to understand is this is one very easy way of solving questions, of calculations rather। ठीक है, तरीका क्या है? What you need to understand is the units digit। We come back to class 1 or I would say prep का basics। Units digit or tens digit, the units digit should add to 10 and the tens and the other digits should be the same। For example, let's take a bigger number, 112 into 118। फाइन, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, थोड़ा खतरनाक लग रहा है देखने में, पर है नहीं। 2 into 8 क्या होता है? 16। 12 into 11 क्या होता है? 12 tens are 120 plus 1, so you have 120 plus 12। Fine, you get it as 132। Fair enough। So if we are able to break calculations and we know some tricks and techniques, it becomes quite easy to solve a lot of questions। Let's look at some other techniques in terms of solving questions। लोगों ने बचपन में बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देखे थे, उनमें से a plus b का होल स्क्वायर और a minus b का होल स्क्वायर। a plus b का होल स्क्वायर हुआ करता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a minus b का होल स्क्वायर हुआ करता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इन दो स्क्वायर्स को यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि 52 का होल स्क्वायर कितना होता है या 47 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम लोग यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन टेल द आंसर विद इन अ सेकंड। लेट्स हैव
an understanding of that technique. 2 का square we can write it as 50 plus 2 का whole square. Fine. 50 plus 2 का whole square हो जाएगा 50 square plus 2 into 50 into 2 plus 2 square. That is primarily 2500 plus 200 plus 04. Fine. Now, can I write this as 2500 plus 200 plus 04? Perfect. I can represent the numbers like this. Now, moment I represent the numbers like this becomes 04, this becomes 2704, this is also 2704. Now, the point to understand here is, for the time being, if I remove these two zeros, हमारा था 52 का स्क्वायर, 52 50 से कितना ज्यादा होता है? 2 ज्यादा है. हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? 25 plus 2 कितना ज्यादा है? 50 से 2 ज्यादा है, और जो ज्यादा है उसका स्क्वायर हमें यहाँ लिखना है. Now, this is the units digit, this is the tens digit, this is the hundreds digit, this is the thousands digit. Okay, your answer comes as 2704. Let's look at another simple question. Similarly, if I were to do 54 का square, what we need to understand is 54 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है. Fine. तो हमें क्या करना है? 50 plus 4 का whole square for a 54 का square. Fine. What we very simply need to do is 25 plus 4 का square. 4 का square is 16. I get my units and tens digits. Along with that, 2916. Okay. If same, I look at 57 का square, the same rule is applicable. 57 का square में 50 से 57 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है. Fine. This can very well be written as 25 plus 7 का square is 49. So we have 49 and 32 here. Agreed? Now, same logic for numbers less than 50. If I'm looking at, let's say, 46 का square. 46 का square is 50 minus 4 का square. Fine? Now, the same rule is applicable. सिर्फ वहां पर जो हम ऐड कर रहे थे, यहां पर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. 25 कितना कम है? 4 कम है. 25 minus 4 plus 4 का square कितना होता है? 16. I get 162116. Similarly, if you look at some other numbers, 44 का square. 44 का square अगर हम करने जा रहे हैं, it is 50 minus 6 का whole square. हमें क्या करना है? 25 minus 6 plus 6 का square. Fine. 6 का square is 36 और यहां पर आ गया 19. The answer comes as 1936. Agreed? So these are some very simple methods with which we can calculate the squares of numbers close to 50. Okay, but what we need to understand is these are derived from these two basic principles that we studied in our class 6 and class 7. Staying in touch with basics helps, and what you get when you stay tuned to the basics is very simple ways of solving questions. Thank you all of you.